Hi everyone, hope you all doing well. So I got like two quick announcements to make before the video starts. So the very first one is कि जो ये पूरा how to become a product manager and my life as a product manager, this all I shot in one video जो मैंने बाद में segregate किए. So the last video on my channel is about how to become a product manager, and this one is around what I do as a product manager in my day-to-day life. So if you guys are interested in how to become a product manager without a non-tech backgrounds as like I am, so after this video you can check out that video. Link is in the description and obviously on the channel and everything. Second one is that if you guys are interested in reading fiction, so recently I published a book. I mean, it's quite a short book, it's just 160 pages, but I guess I have did a decent job of writing a story. So if you guys are interested in reading that, you can do that. One offer thing which I would like to share is that जैसे कि in case you want to talk to me or through TopMate and everything, which costs around 10 euros or something. So if you buy that book, which is far cheaper, if you buy that book, then we can have a chat for free. So we don't need to book it on TopMate. You can just tell me on my email in the description. Mail is in the description that you bought the book and you wrote it. You liked it or whatever, and then we can have a very quick call. I mean, you don't have to tell me that you liked it or not. You just need to tell me that you got the book, okay? And probably a screenshot of the a book with you or whatever, so that I could just feel like I'm becoming an author now. So and we can have a chat around all the product manager or you're studying abroad situation. So and rest, enjoy the video. Thank you so much for your time. Bye bye. Hi everyone, hope you all doing well. So have you ever wondered what a product manager actually does, and importantly, how someone from a non-technical background can be one? So well, I did it, and in this video I'm going to talk about that. So I'm going to talk about what generally product manager is, and I'm guessing a lot of people might have that idea. So you can skip to the further parts, and then a little basic around what are their salaries in the United States or Europe, and then my day-to-day work basically as a product manager, like what I do as a product manager. And in the end part, I'll talk about like if you are from a non-technical background like me, who has studied undergrad or masters in management itself, or any something which is not directly connected to the technical product manager thing, so how you can land into product management. So this is kind of the roadmap, I would say, for the track of product management from a non-technical background. So let's move forward. By the way, a very quick thing that on TopMate, there's some kind of a February month offer going on. So if you wanna schedule a call with me or use any of those TopMate services, link is in description. So you can do that on half rates, whatever they are. And this offer is valid till I guess first week of March. So after that, the prices will resume back to the original rates. So if you wanna schedule that call or anything, you can do that on half price. So go for it. So fun part starts. So what I do as a product manager in our daily life. So I'll start with just briefing around what I work for. So I work for an investment bank, as I have mentioned in previous video. Though it's not really investment bank, it's it's a financial services group. So they do a lot kind of businesses around money. So they also give leasings, and leasing in the sense like not 10 million, 5 million, like it's a very big firm. It's a Asian company, though it's based in Southeast Asia, or not Southeast, in fact purely East Asia, but they are very global now. So they are a financial services group. They do investment banking, they do asset management, they kind of manage more than $1 trillion kind of assets, and then they do leasing, they give loans to big companies, and a lot very big companies in 100 millions, 500 millions, and they run books for 1,000 million kind of dollars for projects all across the globe. So they have an entity in Asia Pacific, in Europe, in United States, and all the America and everything. So I work for their American entity. Now that's a funny thing. I live in Europe. I live in Ireland, to be specific. I live in Dublin, and Dublin में in fact जिस company के लिए I work for, they have a specific office headquarter for European divisions. They have a headquarters for whole of Europe in Dublin,
but I don't work for that business. I work for a business which supports American division in their transformation. So I don't go to that office. I don't go to Dublin office. I go to a different office in Ireland itself, and I purely work for America's division. So I do report to my American managers. My email address is for America's division. So in my email address, it comes for United States, not for EMEA. So that's a funny thing. Though I do work for European people too. I mean, since it's a global firm, and America's division is a lot more involved into platform and all those planning things which I work for. So even if European division needs something, or Asia Pacific region needs something, so our team does that, and since our team does that, meaning I also do that. So in fact, I am involved in a lot of projects with EMEA and United States, and probably I'm getting into something for Asia Pacific in next few months. So even if I'm working for United States or America's division, I am involved with everything. Now, uh, I have mentioned in previous videos that I am a product manager, though I'm not a senior product manager, as I have mentioned quite few times that I have just started, and in fact, just started just 1 year and few months experience I have in total as working full time. Before that, I did have done some few internships, but like real full time experience after completing my education is just 1 year and something. So it's pretty small, but for that, I do get paid enough. I mean, the salary bracket I mentioned previously in the video about how much early age product managers earn. So I do get around that money. So that is fun. Okay, now what I do. So I'm going to talk about this in two ways. First, in more of a straighter way, that अगर simply बताना है तो मैं क्या करता हूँ, and then other part will be a little more in detail. So in the very first part, 80% of my day is attending meetings. 80% सारे product managers का होता है, just not just me, but 80% of the day I just attend meetings and meetings and meetings. उस 80% मीटिंग्स में, और rest 20% is doing some other work. Now I'll talk about what that other work is, but 80% is just meetings. Now in those meetings, 80% of the time I'm there just to say no. Okay, because since we have a lot of work, so product managers are the people who are the people in the industry which are famous for saying no's, giving a lot of no's. Like we can't do that. I mean, obviously we can't just say no, that's also a thing. So हमको relation maintain करने हैं, so we can't say no. So we have to find creative ways or some or the other way to say that we are going to not do it. And उसके लिए आंसर ऐसे हो सकते हैं, say okay, that sounds a definitely good idea, we'll consider that in our next sprint, but for now we are full of capacity, or I'll take this to the architects and see what is future of this thing, and then we'll get back to you. And then अगर वो लोग भूल जाएंगे तो हम भी भूल जाएंगे. So there's a ways of saying no's, and reason behind that is because in that 90%, the 80% in meetings and 80%, 20% doing something else. But अगर हर चीज़ का एक gist निकालें, like एक simple word, what product managers do. So product managers are basically stakeholder managers. We have to manage the stakeholders. So एक किसी भी development team में, किसी भी team में, like which provide services internally to across the businesses, तो requirements day and night आती रहती हैं, and product managers are the people जिनको उनके साथ रिलेशन बना के रखने हैं कि कहीं भी ये ना लगे कि हम उनके काम को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं या डिक्लाइन कर रहे हैं, बट वी नीड टू मेक श्योर कि हमारी टीम की कैपेसिटी क्या है और हम उनसे कितना काम करवा सकते हैं उस पीरियड में. ओके, सो देयर इज़ समथिंग कॉल्ड स्प्रिंट, जो कि अगर आप प्रोडक्ट मैनेजर बनना चाहें या प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहेंगे तो उसके लिए जो पढ़ना पड़ता है एंड ऑल, तो उसमें समझ में आ जाएगा, जो कि मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा थोड़ा सा. बट आई हैव टू पर्सनली मैनेज. सो बाय द वे, मेरी टीम, आई वर्क फॉर प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन एंड ऑटोमेशन टीम, जो मेरी टीम का पूरा नाम है. So what platform integration and automation team does do is, it's a bank, it's a very big bank, and they not everything can be done on Excel, you know. So there's a lot of softwares, lot of platforms, lot of ERP solutions are need to be used for developing everything, from having like a data structure for having every kind of details for customer details, everything, to even HR management, जहाँ पे
एम्प्लॉयज़ की सारी डिटेल्स मैनेज हो पाएँ, एंड देन रिक्रूटमेंट के लिए सारा मैनेजमेंट जो होता है, तो हर चीज़ का सोल्यूशन होता है, और हर चीज़ इंडिपेंडेंटली या एक्सेल पे या सिर्फ मेल्स के थ्रू नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग बैंक, इट्स अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन. सो फॉर दैट अ लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर्स, अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स नीडेड टू बी यूज. तो उन सारे प्लेटफॉर्म्स, उन सारे सॉफ्टवेयर्स को बैंक के सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट करना, दैट्स वॉट माई टीम डू. ओके, and then we develop a lot of automations and a lot of workflows, because फाइनेंशियल सर्विसेज में एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है स्क्रूटनी का, फ्रॉम द फेड्स इन द सेंस लाइक गवर्नमेंट्स का, क्योंकि फाइनेंशियल है एवरीथिंग. अगर एक बैंक फेल होता है या बैंक बहुत कुछ गलत करता है, तो इट हैम्पर्स होल ऑफ द इकोनॉमी फॉर ऑब्वियस रीजंस. अब जैसे कि ये ऑर्गेनाइजेशन है, 1.3 1.8 ट्रिलियन समथिंग एसेट्स दे होल्ड. सो इफ दे डू समथिंग शिट विद दिस 1.8 ट्रिलियन, so it's a big loss to whole of the world, not just to one company or one city or something like that, you know. तो इनके ऊपर बहुत सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, एंड एनी रूल दे मैस अप, इट्स अ 50 million 100 million काइंड ऑफ अ फाइन. सो इट्स अ वेरी बिग रिस्क, यू नो. और गलतियाँ किससे होती हैं? इन मोस्ट केसेस ह्यूमन से होती हैं. सो दैट्स वाई अ लॉट ऑफ प्रोसेस विच आर वेरी मच यू कैन से मैनुअल, जिसमें बहुत सारा ह्यूमन ब्रेन जा रहा है फॉर नो रीज़न, उन सारे प्रोसेसेस को ये सारे बड़े इंस्टीट्यूशन, सारे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर ट्राइंग टू मेक इट मोर ऑटोमेटेड, कि जो स्टेप्स ऑटोमेटिकली हो सकते हैं, लेट्स डू दिस ऑटोमेटिकली, ताकि ह्यूमन ब्रेन उसमें कम से कम यूज़ हो, एंड ह्यूमन ब्रेन बस डिसीजन मेकिंग में यूज़ हो. सो नथिंग विल गो लाइव विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन, बट एटलीस्ट जो नॉट सो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, या जो रेगुलर पार्ट्स हैं जो ऑटोमेटिकली हो सकते हैं, उनको ऑटोमेट किया जाए. तो उसके लिए ऑटोमेशंस बिल्ड होते हैं. So my company uses ServiceNow for all kind of workflows and handling a lot of platforms and everything. As I mentioned previously before, ServiceNow is very useful. And a lot of, like, every company uses ServiceNow. It's not a big deal. Like, every company in the world uses ServiceNow. So every company in the sense, big companies, I won't say like every company, but every big company uses ServiceNow. It's a very useful tool for ticketing. It was originally for ticketing software, so जिस पे आप सारे incidents manage कर सकते हो, but now it's holding a lot of information, all kind of changes and things happening here and there. तो वो सब एक same platform पे आप ला सकते हो. So that's what managed by my team. So my team owns that ServiceNow platform for whole of the banking group. So अगर किसी भी डिपार्टमेंट को सर्विस नाउ के साथ इंटीग्रेट करना है, उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है अपने वर्कफ्लोज और अपने प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए, उनके लिए कैटलॉग डेवलप करने के लिए, सो दे कम टू अस विद द रिक्वायरमेंट, एंड देन मी and other product managers in my team. There are two other product managers, so total we are three product managers in the team. One is vice president product manager, and then another one is product manager, like the second level, and I'm on the third level. So we are the three product managers, and we manage all the requests that comes in, and then analyze कि इसमें value deliver कैसे कर सकते हैं. अगर process उनके पास पहले से enough है, they are already known to it, so it's very useful, it's very simple. Then they give us the requirements, and then we share with the development architects and our directors and our associates, and फिर अगर उनको ठीक लगता है, so we approve it, and then we look for a good time कि कब इसको हम लोग sprint में ला सकते हैं. sprint is the development time. कब इसमें हम sprint में ला सकते हैं, and then we assign the resource, कौन developer इस पे work करेगा, and then we give it to them and they work on it. And then all the further interaction around this thing, कि अगर और further information चाहिए, तो हम लोग इन्फॉर्मेशन कनेक्ट करने के लिए बिजनेस को, यानी जो रिक्वेस्टर है, वो डेवलपर को कनेक्ट करेंगे, एंड देन वील बी ऑन टॉप ऑफ द प्रोसेस. बिकॉज जब प्रोजेक्ट की रिपोर्ट जानी होती है, या सीनियर मैनेजमेंट या डायरेक्टर्स जब रिपोर्ट मांगते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन, सो दे वोंट बी गोइंग टू ईच एंड एवरी डेवलपर फॉर ऑल द प्रोजेक्ट्स. So we, as the product manager, we are responsible to talk them through about what the status of all the projects, or all the development work happening, because we are the product managers. We should know our product. Our product is, because we have some other software tools also, but उन software tools के लिए we have वो more technical project managers who work with those automation softwares. There's something called Ansible from Red Hat, and then a few other softwares too. But to be specific, I am more assigned to the ServiceNow platform. So I would call myself as a platform product manager for ServiceNow in this whole group. So we take care of that. So all the requests come in, we analyze and everything, and then we deliver the value and everything. So this is my usual thing. So 80% of my time is just meetings with the people, and I have to say no to a lot of people. Though I don't say a rash no that we will never work on it. It's just like we can't work it on now.
अगर आपके पास टाइम है, पेशेंस है एंड यू वांट टू डेवलप इन सम, तो आप टिकट लॉक कर दो एंड देन वी लुक इनटू इट लेटर ऑन। एंड देन जब वो फॉलो अप करते हैं एंड देन वी सी कि अगर कितना फीजिबल है एंड देन वी मेक दैट हैपन। सो अ वेरी बिग चंक इज स्टेक होल्डर मैनेजमेंट विच कम्स इन द एंड टू। अगर आप जब मैं प्रोडक्ट मैनेजर कैसे बनना है, नॉन टेक बैकग्राउंड, उसके बारे में बात करूंगा, देन आई टेल कि ये स्टेक होल्डर मैनेजमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। आप किसी भी रोल में हो, अगर आपको प्रोडक्ट मैनेजमेंट में या इनफैक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी स्विच करना है, सो यू नीड टू बी वेरी गुड विद द स्टेक होल्डर मैनेजमेंट पार्ट, पीपल इंटरेक्शन जो है, क्योंकि डेवलपर्स एंड सॉफ्टवेयर्स एंड एवरीथिंग दे ऑल आर वर्किंग अराउंड मशीन्स। ओके, machines are very good, people are tough, and you need some experience or at least an exposure, some kind of exposure to manage people. So that's what it is. Product management is a lot about the stakeholder management. Now other thing is, do I need technical knowledge or do I code and all? So first answer, I don't code in any way. And in a lot of manners, like a lot of product managers don't code. No, none of the product managers or project managers do any actual coding, I would say. And but do I need tech knowledge? In a way, yeah. Now again, for one thing, I didn't had any tech knowledge. I have came from very management background, no engineering, no coding. I don't know any C++, Python or Java. सर्विस नाउ पे डेवलपमेंट के लिए यू नीड जावा, बट आई डोंट नीड इवन इवन दैट। सो मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है उसके बारे में। what I had knowledge why this job like they accepted me or why I got this job was stakeholder management, क्योंकि मैंने stakeholder management पहले किया हुआ था, so for that reason I got the job. But yeah, so no technical knowledge, though there's a commas come with it, that इट्स गुड टू हैव। सो पता नहीं लोग मैंने शायद कुछ यूट्यूब वीडियोस देखे थे जहाँ पे लोग मेंशन करते हैं कि दैट यू कैन बी अ प्रोडक्ट मैनेजर विदाउट एनी टेक्निकल नॉलेज एंड यू डोंट नीड इट एवर। सो दैट्स अ वेरी बैड थिंग। यू कैन बिकम अ प्रोडक्ट मैनेजर probably without or comparatively less technical knowledge, but if you are into it, okay, then you need to know your product. If your product is a technical product, then you need that technical knowledge. I mean, I don't want technical knowledge in the sense कि मुझे कोडिंग अभी भी नहीं सीखनी है और कोडिंग मुझे कभी भी नहीं सीखनी है, बट अगर मैं थोड़ी सी सीख जाता हूँ तो इट विल डेफिनेटली हेल्प मी इन माई वर्क। सेकेंड, अगर मैं नहीं सीख रहा हूँ तब भी मुझे जो टीम का डेवलपमेंट का पूरा प्रोसेस है एंड लॉजिक्स एंड ऑल, हाउ दे बिल्ड अप द लॉजिक्स एंड ऑल, वो मुझे सीखना ही पड़ेगा फॉर गेटिंग बेटर और ग्रोइंग मोर इन टू द वर्क। सो अगेन, टेक्नोलॉजी कंसेप्ट वगैरह नीडेड नहीं है, बट इट्स बेटर टू हैव। नाउ डिपेंड ऑन व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट मैनेजर यू आर। अगर आप FMCG में, ओके, एंड यू गॉट इन टू लाइक फॉर लाइफ बॉय द सोप, आप उसके प्रोडक्ट मैनेजर बन गए हो, तो उसमें टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए आपको, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स नॉट अ टेक प्रोडक्ट। तो उसमें आपको डेफिनेटली थोड़ा सा आइडिया होना पड़ेगा कि वो साबुन बनता है कैसे एंड हाउ इट कैन बी और कैन नॉट बी स्क्रूटिनाइज बाय द गवर्नमेंट और यूजर्स के लिए कैसे हेल्पफुल होगा एंड ऑल। जैसे हर प्रोडक्ट के बारे में प्रोडक्ट मैनेजर शुड नो अबाउट देयर प्रोडक्ट, दैट्स इट। अब अगर आपका प्रोडक्ट टेक्निकल है तो आपको टेक थोड़ा सा तो जानना पड़ेगा। यू कांट बी कम्प्लीटली ब्लैंक अबाउट इट कि बस स्टेक होल्डर मैनेजमेंट में चल जाएगा, क्योंकि बिजनेसेस का, फॉर मी एग्जाम्पल, सिंस आई डोंट नो टेक, मुझे बहुत सारी मीटिंग्स, लाइक इनफैक्ट डेली मीटिंग्स में एटलीस्ट 50% मीटिंग्स ऐसी होती हैं जिसमें मैं जाता हूँ एंड आई डोंट हैव एनी फकिंग क्लू व्हाट दैट मीटिंग इज अबाउट, but I'm there to represent the ServiceNow or platform integration team. Now I have to understand what they're saying and then figure it out in my mind कि क्या जितना मुझे पता है उसके बेसिस पे, एंड देन आई आंसर देम, जो कि हर बार प्रिसाइज आंसर नहीं होता है। सो इन दैट सिचुएशन द आंसर, द आइडियल वर्ड इज आई गेट बैक टू यू ऑन दिस, एंड दैट्स व्हाट एवरी प्रोडक्ट मैनेजर डू इन द इंडस्ट्री। क्योंकि हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट मैनेजर्स को 90% मीटिंग, 80% और 50% मीटिंग्स में ऐसी होती है इसमें नॉलेज नहीं होती है। जो नए प्रोडक्ट, नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे होते हैं, नई मीटिंग्स होती हैं, एंड यू जस्ट गो देयर एंड से दैट आई लुक इनटू दैट, एंड देन आप चेक करते होते हैं, आप टेक्निकल पीपल से, आर्किटेक्ट से चेक करते हो कि इसका मतलब क्या है, क्या इस पर हम हाँ या ना बोल सकते हैं, एंड देन यू टेक दैट आंसर बैक टू द बिजनेस और दैट मीटिंग कि हाँ हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सो अगर वहाँ पे अगर आपको टेक्निकल नॉलेज होगी, इफ़ यू ऑलरेडी नो दोज थिंग्स, तो आपको डिसीजन मेकिंग में थोड़ा हेल्प करेगा। यू कैन क्विकली मेक द डिसीजन रेदर देन टॉकिंग टू सम थर्ड पर्सन, जो कि बहुत प्रेशर नहीं है क्योंकि यू गेट टाइम।
आपको पहले दिन से वो करने को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड विथ टाइम व्हेन यू वर्क इन द सिस्टम, 4 5 6 प्रोजेक्ट्स पे काम कर लोगे आप, सॉफ्टवेयर के सारे, लाइक फॉर एग्जांपल सर्विस नाउ में क्या क्या होता है वो सब सारे प्रोजेक्ट्स पे आप देख लोगे. So it become easier for you to answer those questions. So with time that happens. So wrapping up this part about my day-to-day life as a product manager, I do stakeholder management, I do meetings, and then I ask questions कि क्या ये हो सकता है फ्रॉम द टेक्निकल टीम, एंड हो सकता है या नहीं हो सकता है, टेलिंग टू बैक टू द बिजनेस कि हाँ ये हो सकता है या नहीं हो सकता है. हो सकता है तो कब होगा वो वील सी कि कब हम पॉसिबली इसको कर सकते हैं. कुछ हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स आते हैं जो डायरेक्टली सीईओ से या चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर से आते हैं. सो ऑब्वियसली उसको प्रायोरिटी बनाना है. नाउ टीम का तो प्रोजेक्ट डिसाइड हो गया है कि इतना इतना काम ये लोग करेंगे. अब इसमें इतना बड़ा प्रोजेक्ट, अब सीटीओ को तो आप कभी नहीं बोल सकते, लाइक it's just impossible to say no to in fact even a director. हम अपने बॉस को like I directly report to director of this team, so executive director, so I can't say no to executive director. So if whatever he asks that this needs to be done, I need to get it somewhere adjusted. तो वो adjustment का जो part है जिसमें आपको stakeholder सिर्फ बिजनेस नहीं है ना, स्टेक होल्डर आपके डेवलपर्स भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं क्योंकि दे आर डेवलपिंग द वर्क बट दे हैव वर्क प्रेशर एंड एवरीथिंग. सो I have to make them understand that this needed to be done and why it's very important and how they can accommodate this thing. Now जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे कि ये बैंक हो गया या और भी सारी बड़ी कंपनीज, दे डोंट हायर ऑल ऑफ देयर डेवलपर्स जनरली, क्योंकि इंजीनियर्स आर मोर ऑफ दे आर नॉट डिसीजन मेकिंग रिसोर्सेज, they are working resources. So for that reason a lot of these companies don't hire a lot of engineers, I would say. They because engineers hire कर, it's too much work because engineers का volume थोड़ा ज़्यादा होता है. You can't just need just 4 or 5, you need at least 10 20 engineers, but उन सारे 10 20 engineers को manage करने के लिए you just need 1 or 2 of their managers. So they choose to hire those 1 or 2 senior managers जो vice presidents या senior managers होते हैं. And then ये जो engineers होते हैं they can hire from vendors. So for example for my company we have vendors in the sense थर्ड पार्टी कंपनीज जिनके इंजीनियर्स हमारे प्रोजेक्ट्स पे वर्क करते हैं. तो वी हैव पीपल वर्किंग फ्रॉम अहेड, इट्स अ CDI कंपनी, एंड देन कॉग्निजेंट एंड डेलॉयट एंड ऑल दीज कंपनीज. तो इनके इंजीनियर्स एज हमारे इंजीनियर्स हमारे प्रोजेक्ट्स पे वर्क करते हैं. वी गिव देम वर्क एंड देन दे डेवलप इट एंड देन दे डिलीवर इट. That's our work. So product manager ko again in stakeholders, these vendors also become stakeholders, so we have to manage them also, all these people working from these different companies. So in a bigger picture again, I'll just summarize this. My day-to-day life is just talking to people. Simple words: talking to people, talking to businesses, to developers, to other stakeholders, vendors, to senior management, to junior management, all kind of management, and saying no's and yes, trying to understand what is possible to understand. अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बिना सोचे समझे कुछ भी दाएं बाएं करके एक आंसर देना, एंड देन फिगरिंग आउट कि हाउ दिस फीचर कैन डिलीवर वैल्यू for the organization. That's it. So that's my day-to-day life. Now next part I'll talk about that how you can, the viewers who are from non-technical background, who are almost freshers, how they can start their career into product management.